ओके जी, लास्ट क्लास तक हमने अपने फ्रंट एंड को कर लिया था, यानी फ्रंट एंड में जो हमारे पास पब्लिक फेस्ड यूआई था केएफसी का वो, और जो एडमिन फेस्ड यूआई था वो भी बना लिया था। अब हम बैकएंड बनाएंगे और बैकएंड एक ही जगह हम लिखेंगे इस बैकएंड के फोल्डर के अंदर, और वो दोनों जगहों में फ्रंट एंड और एडमिन। और अगर हम मोबाइल ऐप बनाते हैं इन फ्यूचर इस केएफसी की, तो वो भी इसी बैकएंड के जरिए सर्व होगा। तो इसके अंदर मैंने एक टेस्ट नाम की फाइल बनाई हुई थी, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। सो ऑल आई नीड टू डू इज टू स्टार्ट द बैकएंड ऑफ दिस ऐप। लेट मी जस्ट गो इनसाइड द बैकएंड फोल्डर, क्योंकि हम बैकएंड जो है वो नोड.जेएस एंड एक्सप्रेस में लिखेंगे। सो लेट्स एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल इन जो बैकएंड का छोटा इनिशियल सेटअप है हम उसको कर देते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले करूँगा npm init और -y करूँगा ताकि मेरी पैकेज जेसन फाइल क्रिएट हो जाए रूट डायरेक्टरी में विद डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस। और यहाँ मैं इंडेक्स की जगह server.js कर दूंगा, एंड दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस फॉर नाउ। और उसके बाद मैं इसी बैकएंड के फोल्डर में आके, चूंकि ये मेरा एंट्री पॉइंट है server.js, तो मैं इस नाम से एक फाइल भी बना लूंगा। सो server डॉट JS, एंड देन मुझे चूंकि एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है ताकि जो प्रोफेशनल भी लगे थोड़ा सा, और चीज़ों को हम ऐसे ऑर्गेनाइज करें कि वो रीयूजेबल हों और सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स हों सारी चीज़ें, यानी राउट्स हमारे अलग हों, हमारा कॉन्फ़िगरेशंस अलग हों, मिडलवेयर्स अलग हों, कंट्रोलर्स अलग हों और मॉडल्स अलग हों। तो उसके लिए मैं बैकएंड में जो फोल्डर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ उसके लिए मुझे सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। मैं उसको नाम देता हूँ कंट्रोलर्स। हमारी एप्लीकेशन की जितनी बिजनेस लॉजिक होगी वो कंट्रोलर्स के अंदर आएगी। फिर मैं दोबारा बैकएंड के फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर बनाता हूँ मॉडल्स। जितने भी मेरे डेटाबेस से इंटरेक्शन करने के लिए स्कीमाज होंगे और स्कीमास के बाद मॉडल्स क्रिएट होंगे वो इस फोल्डर में जाएंगे। देन उसके बाद मैं यहाँ पे बनाता हूँ मिडलवेयर्स, जितने भी मुझे मिडलवेयर लिखने हैं उनके लिए ये। देन मैं, यानी ये एक टिपिकल स्टाइल है, ये स्ट्रक्चर है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। आपका इससे डिफरेंट भी हो सकता है, बट दिस इज समथिंग विच इज गुड। देन यूटिलिटी फंक्शंस जो हैं वो मेरे इस फाइल में जाएंगे। एंड देन इसके बाद मुझे और फोल्डर चाहिए राउट्स का। सो मैं बैकएंड के अंदर एक और फोल्डर बना लूँगा जिसको मैं राउट्स का नाम दे दूँगा। और देन फॉर नाउ आई थिंक दीज आर इनफ। हाँ, एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे चाहिए डेटाबेस की कनेक्टिविटी वगैरह के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो मैं इसे कहूँगा जी config का फोल्डर बना लूँगा। सो दिस इज द फोल्डर हायरार्की ऑफ द बैकएंड दैट आई विल बी एक्चुअली टेकिंग इट विद अलोंग। सबसे पहले मैं server.js पे आता हूँ और यहाँ पे बेसिक एक्सप्रेस की ऐप ओपन करता हूँ। सो जस्ट फॉर टाइम सेविंग लेट मी गो हेयर एंड ExpressJS पे मैं जाके इसे इसकी डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल साथ साथ इसको फॉलो करूँगा। सो अगर आप यहाँ गेटिंग स्टार्टेड पेजेज में उस पे जाएं तो सबसे पहले हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक्सप्रेस ऑब्वियसली हमारे इस रूट डायरेक्टरी में इंस्टॉल्ड नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा npm i एक्सप्रेस। साथ ही में नोडमोन भी कर लूँगा ताकि मुझे चेंजेस के बाद सर्वर को बार बार रीस्टार्ट ना करना पड़े। और इसके साथ ही बाकी जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ी हम साथ साथ करते रहेंगे। सो जब तक ये इंस्टॉल होता हम वापस डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, और यहाँ पे अगर हम गेटिंग स्टार्टेड पेज पे जाएं तो यहाँ इसका इनिशियल जो सर्वर सेटअप है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। सो आई एम जस्ट कॉपिंग इट एज इट इज़ फ्रॉम हियर। इनफैक्ट यू कैन राइट इट मैनुअली। आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल इन अदर लेक्चर्स। इसलिए हम यहाँ पे इसे डायरेक्ट इसको कॉपी करेंगे। मैंने सिंपली ये किया है, एक्सप्रेस को रिक्वायर किया, देन एक्सप्रेस का फंक्शन जो है वो कॉल करके मैंने ऐप में स्टोर कर दिया, देन इट पोर्ट। और उसके बाद मैं यहाँ पे बेसिक सा एक राउट लिखा, यानी एक मिडलवेयर फंक्शन लिखा जिसमें स्लैश पे जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसे रिस्पॉन्स में हेलो वर्ल्ड मिलेगा। देन दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। और लेट्स सी, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। बेसिक से सेटअप के लिए वैसे तो अगर मैं इसे चलाऊंगा अभी मेरा सर्वर जो है वो चल जाएगा। लेट मी सेव इट फर्स्ट एंड देन
let me go in here and node. So why it is not typing here? So let me open up the terminal again. Git bash cd backend, और यहाँ पे मैं yep, now it is writing. So node server.js करूँगा. So let's see, my server is running example app listening on port 3000. So this is what actually इसको आप example app की जगह server app listening on port this, only server listening on port. अच्छा, यहाँ पे बेहतरीन प्रैक्टिस एक ये भी होती है कि हम एक env फाइल बना लें जहाँ हम अपनी सारी जो प्राइवेट डिटेल्स हैं या जिनको हमने बार बार रीयूज़ करना है अपनी एप्लीकेशन में, उसमें उस env में उसको सेव कर सकें. सो हम यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं, या एनवायरनमेंट वेरिएबल्स जितने भी हैं मैं उनको .env में रखता हूँ. इनफैक्ट प्रोफेशनल अप्रोच यही है. तो सबसे पहली जो मैं रखूँगा यहाँ env में वो ये पोर्ट है. अब मैं पोर्ट को 3000 नहीं दूंगा, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी 3000 पे हमारा फ्रंट एंड भी चल रहा होता है, सो कन्फ्लिक्ट आ सकता है. सो मैं यहाँ पे पोर्ट लिखता हूँ और दैट इज गोइंग टू बी लाइक, मैं कहता हूँ जी इसको ये 9000 पे चलाए. और इस पोर्ट को env यानी एनवायरनमेंट वेरिएबल इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें एक पैकेज की ज़रूरत पड़ती है. दैट पैकेज इज ऑब्वियसली कॉल्ड .env. तो जल्दी से इस env को हम कॉपी कर लेते हैं और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं. मैं इसको ब्रेक करूँगा, यहाँ पे सेव करूँगा .env. जब तक ये .env इंस्टॉल होता, मैं इसका दो चीज़ें हमें चाहिए होंगी. एक तो हम .env को इंपोर्ट करेंगे लाइक दिस, आई मीन रिक्वायर करेंगे, बिकॉज वी आर यूजिंग ES5 सिंटैक्स इन हियर आर बैकएंड एप्लीकेशन. एक तो हमने ये किया जी .env, और फिर हम .env को सिंपल एक काम करेंगे यहाँ पे .config, ये दिस वन, या यूं कर सकते हैं हम .env.config के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, या सिंपली हम यहीं पे .config कॉल कर सकते हैं. सो देन हमें इसके वेरिएबल में स्टोर करने की भी ज़रूरत नहीं है. अब हम बेसिकली इसकी वजह से यहाँ पे ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हमने .env फाइल में सेव किए हैं लाइक पोर्ट के नाम से, वो हम यहाँ एक्सेस कर सकते हैं. और वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं? लाइक process.env.port, this name that I just mentioned over here, right inside the port. अब मैं जितने भी एनवायरनमेंट एप्लीकेशन लेवल के वेरिएबल्स होंगे वो .env में सेव करूंगा, और .env के बाद मैं उन्हें जाके जहाँ चाहूँगा उसे इस्तेमाल कर लूँगा लाइक दिस process.env.port. सो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से भी यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ. अब मैं यहाँ पे कहीं भी पोर्ट यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि मैं पोर्ट .env से ला रहा हूँ. सो लाइक नाउ इफ वी गो बैक एंड रन द एप्लीकेशन अगेन, सो इट्स स्टिल सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट 9000. इसका मतलब ये है कि हमारी .env config जो है दैट इज सक्सेसफुली configured. Now what we need to do is, अब चूंकि मुझे जब भी कोई चेंज करनी होगी, let's सपोज ये, तो मुझे मेरा सर्वर ऑटो रीस्टार्ट नहीं होता, और फिर जो लेटेस्ट चेंजेस होंगी वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगी. सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बजाय इसके मैं इसको नोड मोन स्टार्ट करता हूँ एंड लेट्स सी इफ इट इज रनिंग, नोड मोन रनिंग और नॉट. सो यस, नाउ माय सर्वर इज रनिंग ऑन द नोड मोन. इनफैक्ट मैं नोड मोन को भी यहाँ से हटा के package.json में अपने स्क्रिप्ट की फाइल में लिख सकता हूँ. सो इनसाइड द स्क्रिप्ट्स यू कैन सेट अप योर ओन स्क्रिप्ट्स एज मेनी एज यू वांट. सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्ट का स्क्रिप्ट लिखता हूँ, और इस स्टार्ट के स्क्रिप्ट के आगे जो कमांड है वो मैं लिखता हूँ नोड मोन, और दैट इज server.js. तो अब मैं जब npm स्टार्ट लिखता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि npm स्टार्ट लिखने पे ये वाली कमांड रन हो. तो ये स्क्रिप्ट में जो कुछ भी आप लिखते हैं उसके लिए आप ये npm का कीवर्ड साथ में ये कमांड लिखते हैं जो भी आप यहाँ टाइप करते हैं. तो वो क्या करेगा, राइट साइड पे जो कमांड मेंशन हुई होगी वो उसको एग्जीक्यूट करेगा. सो लेट्स गो अहेड, ब्रेक दिस प्रोसेस, कंट्रोल C प्रेस करके
एंड देन मैं बजाय nodemon स्टार्ट के npm स्टार्ट अगर करूं तो माय nodemon एक्चुअली टेक चार्ज। सो दैट्स प्रीटी मच इट। हमने अपना स्क्रिप्ट भी डिफाइन कर लिया, हमने अपने env भी सेटअप कर लिया। सो दिस इज काइंड ऑफ अ बेसिक स्टफ। नाउ मेरा पहला बेसिक जो राउट है वो यहाँ मैंने सेटअप कर लिया है। एंड लेट्स गो हाउ टू टेस्ट। हम अपनी बैकएंड की एपीआई जब तक ये बन नहीं जाती हम उसे पोस्टमैन के जरिए टेस्ट करेंगे। जब वंस हम अपनी एपीआई कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम उसे अपनी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन जो हमने डिजाइन किया उसके साथ कनेक्ट करेंगे। और लेट मी ओपन अप द पोस्टमैन ताकि मैं इस पर्टिकुलर राउट पे जाके या स्लैश को टारगेट करके हिट करके चेक करूंगा इफ सर्वर इज गिविंग मी अ रिस्पॉन्स और नॉट। So as we all know, let me close everything that was previously opened. As we all know, हमारा सर्वर जो है वो लोकल होस्ट 9000 पे चल रहा है। So let me clear everything from here till here and make it from 5000 to 9000 and let's see we are getting this hello world. It means कि हमारी जो बैकएंड की एपीआई का जो पहली एपीआई है या एंड पॉइंट है वो हमने लिख लिया है। अब नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डू एवरीथिंग ओवर हियर बिकॉज सर्वर की फाइल में बहुत ज़्यादा रश बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम राउट्स को अलग करेंगे, कंट्रोलर्स को अलग करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम अपने ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट या ई कॉमर्स से रिलेटेड काम करेंगे केएफसी पाकिस्तान में, उसमें हमें रिक्वायर्ड होगा कि हम सबसे पहले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये प्रोडक्ट्स का एक डेटाबेस मेंटेन करें या डेटाबेस बनाएं और उस डेटाबेस में कलेक्शन बना के सारे प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करें। फॉर नाउ हमें प्रोडक्ट्स की कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, वी डू हैव द टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड देन आई मीन क्वांटिटी कितनी है वगैरह वगैरह। तो जितनी चीज़ें हमें ज़रूरत और इमेजेस का ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट की हमें डिटेल सेव करनी है डेटाबेस के अंदर। सो व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट इज कि हम जाके एक प्रोडक्ट की बनाते हैं कंट्रोलर, देन प्रोडक्ट का राउट एंड देन हम उस राउट को हिट करके चेक करते हैं जहां फिर हम प्रोडक्ट पे सारे CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, क्रिएट प्रोडक्ट, रीड, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, गेट सिंगल प्रोडक्ट एटसेट्रा। So in here what we need to do is inside the route file what we first of all need to do is हम यहाँ पे routes में बनाते हैं जी products.js और routes में सबसे पहले हमें दोबारा एक्सप्रेस में जाइए हेल्प और यहाँ पे राउटिंग पे जाएं और बिल्कुल बॉटम बिकॉज वी आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी स्पेशल। इनफैक्ट यहाँ पे ये दो लाइनें जो एक्सप्रेस राउटर को हम इस्तेमाल करेंगे। सो आई एम जस्ट कॉपिंग इट, पेस्टिंग इट इन हियर और यहाँ पे लेट मी डू दैट दिस और यहाँ पे मैं राउटर डॉट राउट और इसमें मैं राउट स्पेसिफाई करूँगा सबसे पहले। फॉर एग्जांपल क्रिएट या सिंपली मैं राउट बनाऊंगा जी product/product/new। ये राउट क्या करेगा, ये बेसिकली नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को सेव करेगा और दैट इज गोइंग टू बी द पोस्ट वन। और इसके अंदर मैं एक फंक्शन लिखूंगा दैट इज ये फंक्शन कहाँ लिखूंगा, कंट्रोलर के अंदर। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू क्रिएट प्रोडक्ट कर दूंगा और दैट्स प्रीटी मच इट। अब मैं यहाँ पे आऊँगा चूँकि मेरे पास ये मुख्तलिफ राउट्स होंगे /all/product/id/product/ इसको हम कहेंगे जी update/id, यानी ये प्रोडक्ट सारे CRUD ऑपरेशन होंगे। ये राउट क्या करेगा, न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करेगा। ये क्या करेगा, गेट ऑल प्रोडक्ट्स यानी सारे प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर देगा हमें। ये हमें सिंगल प्रोडक्ट बेस्ड ऑन आईडी देगा, ये अपडेट बेस्ड ऑन आईडी होगा और ये हमारा डिलीट होगा। सो दीज आर ऑल द राउट्स बट वेट अ मोमेंट बिकॉज वी डू नीड टू हैव दिस क्रिएट प्रोडक्ट। इसके लिए हमें क्या होना होगा,
गेट ऑल प्रोडक्ट्स, इसके लिए हमें चाहिए होगा जी गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। अच्छा, ये चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में, जिसमें हमने डिटेल से टू डू ऐप पढ़ी थी, तो उसमें मैं ये सारा फ्लो पता है। इफ somebody who is not from my class and who is watching still this video on YouTube from outside, तो आप मेरी दूसरी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज पे जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अदरवाइज लेट मी नो, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक। देन गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, और इसे हम कहेंगे जी अपडेट प्रोडक्ट, और इसे हम कहेंगे जी डिलीट प्रोडक्ट। सो दैट्स प्रीटी मच इट। ये सारे इनमें से कोई भी फंक्शन अभी हमने डिफाइन नहीं किया, तो ये सारे फंक्शन हम कहाँ डिफाइन करेंगे? दे वुड बी डिफाइंड इन द कंट्रोलर। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू राउटर। ये वाला जो राउटर है जिसमें हम सारे ये सेव कर रहे हैं राउट्स, उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम इसे यहाँ से बाहर से यूज कर सकें। ऑब्वियसली इसे हम कॉल करेंगे किसी और जगह से, सर्वर से मोस्ट प्रोबेबली। सो हमारा प्रोडक्ट का जो राउट है, ये प्रोडक्ट राउट्स हैं, वो सारे के सारे बन गए। मजीद जो चाहिए हम दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे। एंड देन नाउ वी नीड टू डिफाइन ऑल दीज मेथड्स, क्रिएट प्रोडक्ट, गेट ऑल प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, update product and delete product. So for that we need to go into the controller, and then we need to again have this product controllers dot js, and inside it we have to define it like exports dot create। अच्छा, ये वाले फंक्शंस सारे के सारे यही होंगे जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी यहाँ पे हमने ऑलरेडी कॉल कर लिए हैं। सो लेट्स डिफाइन देम। दिस इट नीड्स टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ कॉल बैक फंक्शन, और हमें पता है कि हमारे पास एक्सप्रेस की ऐप में तीन चीज़ें मौजूद होती हैं एज एन आर्ग्यूमेंट: रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। So what gonna we do is, why it is calling create request. Okay, so now what we need to do is जब इसके बाद हमें अच्छा, पहले हम एक को टेस्ट कर लेते हैं कि whether it is being called or not successfully. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इसको कॉल आएगी तो मैं कहता हूँ कि response dot json, और इस json में ये मुझे मैसेज दे दे success. So now when we hit this function from in here, बाकियों को मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, थोड़ी देर में वापस आता हूँ। जस्ट आई नीड टू टेस्ट इट वेदर दिस राउट इज वर्किंग और नॉट, यानी इनिशियल सेटअप मेरा ठीक हुआ या नहीं हुआ। जब ये राउट हिट होगा तो क्रिएट प्रोडक्ट कॉल होगा, क्रिएट प्रोडक्ट कॉल होगा तो वेल इट विल गो। ऑब्वियसली अभी तक मैंने ये जो फंक्शन कंट्रोलर में लिखा, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट तो कर रहा हूँ, यहाँ इम्पोर्ट नहीं कर रहा ताकि ये यहाँ अवेलेबल हो सके। सो फॉर दैट लेट मी डू इट फॉर यू कॉन्स्ट, और इसे मैं कहूँगा जी दिस वन क्रिएट प्रोडक्ट, इसको रिक्वायर करे कहाँ से, लेट मी गिव इट अ करेक्ट पाथ फॉर दैट। So controllers, and inside the controllers I need to have the product controller. So now if I right click, go to the definition, so it is successfully linked. And now अब मैंने बेसिकली राउट्स अलग डिफाइन किए हुए हैं, कंट्रोलर की लॉजिक अलग डिफाइन की हुई है, लेकिन मुझे इन सारों को यानी इन राउट्स को अवेलेबल करवाना है सर्वर के अंदर, बिकॉज अल्टीमेटली रिक्वेस्ट तो सर्वर ने एंटरटेन करनी है। So for that, what I need to do is, instead of this, I need a global middleware like app.use, और इस app.use में मैं माउंट करूंगा राउट को, इसको मैं कहूँगा जी /API/v1। जरूरी नहीं है आप ये लिखें, आप सिंपली इसको खाली सिर्फ स्लैश भी दे सकते हैं। एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं यहाँ पे वो राउट्स दूंगा जो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट्स किए हुए हैं। सो यहाँ से ये राउट एक्सपोर्ट हो रहे हैं। सो लेट मी गो हेयर एंड const, और इसको आप कह लें दैट इज गोइंग टू बी products equals to require, and that is going to be like this,
come into the routes and then inside the route this is the product. So मैं इसको copy करूँगा, यहाँ पे इसको paste करूँगा and that's pretty much like this. My server is still running back. और अब मैं अगर /API/v1 और उसके बाद लिखूंगा /product/new, तो this function should be triggered and this function is present over here and my response should be success. And now let's come back here और यहाँ पे हम /API/v1 and then /product. Is it product or products? Let me check. Product/new, not product/new. So still this is going to be the post request, लेकिन मैं post की body में कुछ नहीं भेज रहा, मैं just इसको hit करके देखना चाह रहा हूँ कि if everything is going well. So make sure कि this is the post request. So यहाँ जो चीज़ mention होगी आप postman से भी वहीं भेजेंगे post. So let's hit it and that's pretty much like this success. इसका मतलब ये है कि this success is coming from right inside the controller. Everything is connected and linked successfully. So now uncomment it. और ये सारे जो फंक्शंस हैं गेट ऑल प्रोडक्ट्स, इन सारों को आप इंपोर्ट कर लें. सो मैं यहाँ पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ. अभी तो मैंने डिफाइन नहीं किए. आई एम जस्ट गोइंग टू डिफाइन देम soon after this one and then update and then delete. That's pretty much like this. So still why it is giving me error, because मैंने ये functions यहाँ call किए हुए हैं, import किए हुए हैं, इनको define किए नहीं किया हुआ. So let me go ahead, copy this one और यहाँ पे इस सारे फंक्शन को हम इसकी डुप्लीकेशन बनाते हैं. देन इसको कहते हैं गेट ऑल प्रोडक्ट्स. पहले हम सारे फंक्शंस की डेफिनेशंस बना लेते हैं, फिर हम उनके अंदर जाके उसकी लॉजिक को लिखेंगे. तीसरा फंक्शन मेरे पास है गेट प्रोडक्ट बाय आईडी. then let's move ahead for the next and that is going to be like update product. This is going to be the update product and the last one is delete product. So let me once again copy it and let's do it like this. So मेरे सारे एरर्स चले गए because मैंने सारे फंक्शंस को डिफाइन कर लिया. अब इनके अंदर जो लॉजिक है हर एक की डिफरेंट होगी. So for that now what we need to do is let me close it just to have a little more space in it. अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करना है. उस प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए मुझे सबसे पहले, अच्छा पहले मैं स्कीमा बाद में डिफाइन करूंगा क्योंकि पहले मैं ये देख लेता हूँ कि मैं जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट डालता हूँ और उस रिक्वेस्ट में जो डाटा भेजूंगा बॉडी के अंदर वो डाटा यहाँ रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा. So in order to receive that data, what I need to do is मैं ये कहूँगा जी कि const body which is the data that is sent by the user and that can be received like request dot body. So this is the request object which will actually have the data that is coming from the front end. So let me give it as a response. So इस body को ही मैं response में दे देता हूँ ताकि मुझे पता लगे if I am getting the data out from the front end. So let's see. यहाँ पे मैं आता हूँ प्रोडक्ट में, यहाँ से रॉ में आता हूँ, यहाँ से जेसन में जाता हूँ. अब मेरे पास जो प्रोडक्ट होगा उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी. आई नीड टू हैव एन ऑब्जेक्ट और सबसे पहले मैं उसे कहूँगा जी दैट इज गोइंग टू बी टाइटल एंड दैट टाइटल इज गोइंग टू बी like let's have some valid object, twister कह लें इसको. So for that twister and then let's prepare it for the description और इसको some description. So I have data prepared for this particular project somewhere. I'll find it and we'll try in fact to place that data at once we actually do this successfully. And then description के बाद we need something like price and that's going to be like you can say 250. Then you can say stock, that is going to be 20 and then image, that is going to be some image और मैं फिलहाल इसे blank छोड़ता हूँ because I don't have image.
and for now this seems good for now. In fact we'll improve it later on. अब अगर मैं इसको रिक्वेस्ट भेजूंगा इसी /product/new में, तो मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा, एंड लेट्स सी दिस टाइम रिस्पॉन्स में यही ऑब्जेक्ट आएगा जो मैं भेज रहा हूँ. तो इसका मतलब ये है कि now this seems not working for now. It's product/new and this is raw, and inside the body I'm sending the data. So let's see what actually happening right on the backend. So I'm receiving the data from the request body and I'm sending it back to this. Seems good. Let me try it again. So it is /product/new. So let me console it right over here. What is going on with it? console.log body. तो ये मुझे कंसोल करेगा कहाँ पे? यहाँ बॉडी पे. So my server is running again. Let's move ahead. Go ahead and yep, undefined. So this is pretty much in fact quite understandable. हमें बॉडी पार्सर एक पैकेज होता है वो करना पड़ेगा ताकि हमारे ये जो बॉडी से डाटा रिसीव हो वो सक्सेसफुली हो. So we have to go and we have to actually install another package, and that package is called a body parser. That would actually parse the data that is coming in the request body. So let's go ahead and do that. npm install server as it is run होता रहे. मैं एक separate tab में I have to just open up the git bash, और मैं इसे cd like I have to cd backend and then मुझे बॉडी पार्सर इंस्टॉल करना है. जब तक ये इंस्टॉल होता आप यहाँ आएँ और इस बॉडी पार्सर को यहाँ से कॉपी करें, अपने सर्वर पे जाएं और यहाँ पे कॉन्स्ट लिख के बॉडी पार्सर, और इस बॉडी पार्सर को आप एज अ ग्लोबल मिडलवेयर app.use के अंदर कॉल कर लें. सो लेट्स डू दैट like this, app.use and then body parser. Do it like this, exactly what it is saying. Body parser, this is okay. This is saying that the body parser is deprecated. Use individual JSON URL encoded middleware, right? So we can use it later on, but let's see if our body is working or not. Yep, it is working now. It is coming with the data, and that is coming from the server this time. Okay, so now what we can do is now the same data is over here in the console as well. So let's remove the console from here. Where is that? Remove the console from here. और अब हमें बेसिकली ये जो डाटा यूजर भेज रहा है वो हमें सिर्फ सर्वर से वापस नहीं लाना, बल्कि हमें सर्वर से आगे भेजना है डेटाबेस के अंदर. सो अभी तक हमारा डेटाबेस इंस्टॉल्ड, हमें ऑब्वियसली हमने डेटाबेस के साथ काम नहीं किया. सो मेरे पास ऑलरेडी MongoDB इंस्टॉल्ड है विद कैंपस. तो मैं अगर यहाँ पे करूँ तो MongoDB विद कैंपस. अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं जल्दी से. MongoDB के ऑफिशियल साइट से कम्युनिटी सर्वर एडिशन. जब ये इंस्टॉल हो तो सेकंड स्टेप ये है कि आपने हमें mongoose चाहिए, बिकॉज हम mongoose के जरिए डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं. सो लेट्स गो अहेड एंड इंस्टॉल द mongoose एज वेल. सो npm i mongoose के साथ हमें ये सपोर्ट मिलती है कि हम यहाँ पे स्कीमा कर सकते हैं क्रिएट, और स्कीमा की बेस पे हम फिर अपने मॉडल्स बना सकते हैं. सो लेट्स गो एंड चेक आउट mongoose डॉक्यूमेंटेशन. और देश सबसे पहले हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, और डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए ये सिंपल सा स्निपेट यहाँ अवेलेबल है होम पेज पे mongoose के. सो लेट्स डू दैट. हमारे पास वंस mongoose is installed, let's go to the config first, because we have to connect our application with the database first and then we have to create the schema. So उसके लिए मैं config में आया, backend के फोल्डर के अंदर जो मैंने बनाई थी उस config के अंदर मैं एक config.js फाइल बना लेता हूँ, और इसके अंदर मैं आकर सिंपली ये दो लाइनें कॉपी कर लेता हूँ.
and then I'll tell you how to actually connect. So this is what, so मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखने लगा हूँ जिसको मैं कहता हूँ const connect db, and that is going to be the callback function. This is like this, and I am just going to have it in the try catch block, and then I'm just going to have this and try to make it an async function, make it wait, and if there is an error, just console it to check what is the error, and that's it. और अगर ये कनेक्ट हो जाए तो ये किसके साथ कनेक्ट करे, ये बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट का एड्रेस होता है नॉर्मली, जब डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ MongoDB लोकल होस्ट के स्पोर्ट पे चलता है. सो डोंट टच इट, इनफैक्ट नो नीड टू डू दैट. सो लाइक वी हैव टू गिव इट अ नेम KFC. यहाँ पे जो नाम देंगे आपके MongoDB के डेटाबेस में जाके आपके डेटाबेस का नाम यही होगा, KFC. गॉट इट? सो लाइक दिस व्हाट वी नीड टू डू इज, अगर ये कनेक्ट हो जाए तो देन क्या करे, डॉट देन नॉट लाइक दिस, और इस कॉलबैक फंक्शन में हमारे पास कनेक्शन की जो डिटेल है वो दे दे, एंड देन हम इसे कह सकते हैं जी कंसोल डॉट लॉग और database is connected. For now we can see this message. लेटर हम इस कनेक्शन के वेरिएबल में से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं. सो लेट्स ब्रेक दिस लाइन सो दैट इट बिकम्स क्लियरली रीडेबल. सो अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे, EXPO और एक्सपोर्ट्स. तो यहाँ एक्सपोर्ट्स करने के लिए ये तरीका है जैसे हमने कंट्रोलर में किया, एक्सपोर्ट्स डॉट कनेक्ट DB, ये connect database instead of only DB. So now we can use this function right over here, right inside the server. So let's do that. Const connect database equals to require, and for that we need to go to the same folder config, and inside the config, in the config file. So now we can call this function right above everything. So like here. Now if we come back here, so we should have two messages instead of one. One for the, still we are having an application crash for us, and that is probably because it is saying connect database is not a function, and it is error on JS line JS 8. This error is right over here, connect database. So this is something here. Okay, why it is giving error? Connect database, and what is the stack trace? What does it say? Backend server loader or let me let's do that. Sports dot this. Why? Let's export it like this. Module. Oh, I see. I got it. Because whenever you export it like this, exports dot connect database, you always have to keep in mind that you need to import like this in the bracket. यानी जब भी आप यहाँ से एक्सपोर्ट क्यों करेंगे, इनलाइन एक्सपोर्ट करेंगे सॉर्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स डॉट कनेक्ट डेटाबेस, तो इसको आप इंपोर्ट इस स्टाइल से करेंगे करली ब्रैकेट्स में. लेकिन अगर आप इसको इंपोर्ट दूसरी तरह से यानी इसको एक्सपोर्ट क्यों करेंगे, मॉड्यूल एज अ मॉड्यूल एक्सपोर्ट करेंगे, तो फिर आपको करली ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है. मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट अगर मैं इसको यूं करता, कनेक्ट डेटाबेस,
और यूं ना करता, मैं सिंपली कॉन्स्ट कर देता, तो अब आपको यहाँ पे जो इंपोर्ट करना था उसके लिए आपको करली ब्रैकेट्स की जरूरत ना पड़ती. सो दैट्स द डिफरेंस दैट यू नीड टू रिमेंबर. गॉट इट? आई ऑलवेज actually make this kind of error. So let me do that. So that's particularly database is connected. Now I am using it without the curly brackets. But what if I have to import it like in the previous style, like this? So अगर मैंने inline export किया तो then I need to come up with these curly brackets. So that was the little tricky part. Anyways, so my server is listening on port this, database is connected, so everything is going well. And now I'm in a position to actually create the schema for the products for now. So let's go ahead and right inside the model, I have to create product schema dot js. And just to create schema, let's go to the Mongoose documentation. What does it say and how can we create a schema? In fact, we can straight away go for that, but this is the helpful one for us. So let's copy this piece from here just for the sake of saving time. So we are going to have the product schema, in fact, product schema instead of only that. And then we need to remove everything from inside. And then we need to have title for the product, and that is going to be, its type is going to be like string with capital S. Then the required is going to be like true, and if in case it is not provided, we have to give message like title is required. And if it is like min length, title की जो minimum length है, that needs to be 6. किसी भी product का नाम इसको 4 कर दें. If it is a realistic product, then it should not have its name length, a title length less than 4. So please provide title having length more than 4 characters. So whatever message you like. In fact, if it becomes too long, yeah, you कह लें कि at least 4 characters required. So that's pretty much like this. And then we have to come back here, और उसको मैंने title की जगह description कर दिया. And then type string required description. और ये हम required भी नहीं रखते because description product may have description or may not have description. So that's it. And then next thing हमने क्या यहाँ रखी हुई है जी, price, stock and image. So for that, what we have to do is we have to like this. I mean, what's going on? So description के बाद price, and the price is going to be a number. And then we need to have a stock, and stock is also going to be a number. And then we need to have something like image. Why the language is changed? Then this is going to be a image. हम normally image को Cloudinary पे upload करेंगे जो कि cloud service है, और यहाँ पे उसका link save करेंगे. So यहाँ पे हम image को type string कर देते हैं. String. That's it. Or
दैट्स प्रीटी मच लाइक फॉर नाउ। हाँ, एक और चीज़ हम यहाँ करते हैं कि हम चाहते हैं कि जब भी ये प्रोडक्ट क्रिएट हो तो यहाँ पे हम टाइम स्टैम्प्स भी दे देते हैं। सो जस्ट गो एंड टाइम स्टैम्प्स, दैट्स गोना बी। तो ये बेसिकली जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया ये क्या करेगा, जब भी कोई प्रोडक्ट क्रिएट या अपडेट होगा तो ये ऑटोमेटिकली उसकी टाइम स्टैम्प जिस टाइम पे होगा वो ऑटोमेटिक स्टोर कर लेगा। सो इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ जब ये एक्चुअली डेटाबेस में रिकॉर्ड सेव होगा तब। सो फॉर नाउ दिस इज गुड इनफ। फ्यूचर में हमारे पास जो जो चीज़ हुई फर्दर हम इसको अपडेट करते रहेंगे। बिल्कुल सिंपल रख रहे हैं हम प्रोडक्ट को, क्योंकि जो हमें यहाँ पे KFC में सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं वो अभी तक यही हैं कि वी हैव इमेज ऑफ द प्रोडक्ट, टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, एंड देन दी whatsoever you can call it, price of an image, then stock, जो एडमिन को ज़रूरत पड़ेगा ट्रैक करने के लिए कि प्रोडक्ट कितना है कितना नहीं है। हाँ, इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, ड्रिंक्स और एड ऑन्स, गॉट इट। सो ये भी चूंकि ड्रिंक भी सेलेक्ट कर सकता है और एड ऑन भी सेलेक्ट कर सकता है, तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं इमेज के बाद ड्रिंक्स, एंड दैट ड्रिंक कैन बी लाइक, क्योंकि एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट मल्टीपल ड्रिंक्स हो सकते हैं और एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट मल्टीपल एड ऑन्स भी हो सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रोडक्ट को लो नहीं, ड्रिंक नहीं, बल्कि ये जो ड्रिंक है वो एक वक्त में एक ही सेलेक्ट हो रहा है, लाइक वी आर हैविंग द रेडियो बटन्स, बट एड ऑन्स एक वक्त में एक से ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, गॉट इट। सो वी हैव टू एक्चुअली मेंटेन द अरे इनसाइड। सो ड्रिंक्स को मैं कहूँगा जी दिस इज गोइंग टू बी लाइक, अच्छा हम ड्रिंक्स की और एड ऑन्स की कलेक्शंस अलग अलग बनाएंगे और फिर उनका रेफरेंस यहाँ देंगे, यानी वन टू मैनी रिलेशनशिप्स बनाएंगे कि वन प्रोडक्ट कैन हैव मल्टीपल, वन प्रोडक्ट कैन हैव वन ड्रिंक और वन प्रोडक्ट कैन हैव मल्टीपल एड ऑन्स। सो हम वन टू मैनी रिलेशनशिप्स या रेफरेंसिंग पे भी बाद में आएंगे। सो फॉर नाउ दिस इज ओके एंड सो सिंपल। पहले हम ये क्रड बेसिक कंप्लीट कर लें फिर हम उसकी तरफ भी आते हैं। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू क्रिएट अ मॉडल फॉर दिस। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, mongoose डॉट मॉडल, और उस मॉडल के लिए मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा जी प्रोडक्ट, और यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट स्कीमा देना पड़ेगा, एंड देन मैं इसको सेव करूँगा कॉन्स्ट प्रोडक्ट में सो दैट आई कैन यूज इट लेटर ऑन। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट equals to this product so that I can use it. ओके अब डेटाबेस में जब ये मैप होगा तो ये जो प्रोडक्ट है ये प्लूरल बन जाएगा प्रोडक्ट्स, और ये कलेक्शन का नाम बन जाएगा, एंड देन उसके अंदर ये स्ट्रक्चर होगा डेटा का। अच्छा एवरी प्रोडक्ट मस्ट हैव अ प्राइस, तो इसको भी आप रिक्वायर्ड कर दें। so required is going to be like in the new line is going to be like true, and then if it's not provided price is required, stock obviously is required है, इसको भी required होना चाहिए, and then this also needs to be true, not like this, like true, and if it is not true stock is required, and that's pretty much it. इमेज भी ऑप्शनल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो विद दिस थिंग डन and with this product sort of thing being exported, now we have to come back to the controller product, और यहाँ जहाँ हम यूजर से बॉडी ले रहे हैं उसकी, इसको मैं यहाँ पे आके यानी क्रिएट न्यू प्रोडक्ट पे जाके इसको मैं ट्राई कैच देता हूँ, एंड देन ट्राई कैच में व्हाट आई हैव टू डू इज since I have to perform a database operation, so let me make it an async function, and then await product वही है जो मैंने अभी लेट्स एक्सपोर्ट किया था, क्लोज कर दें, इसको भी क्लोज कर दें और इसको भी क्लोज कर दें।
सो लेट्स ब्रिंग इन हियर। सो ये प्रोडक्ट्स मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ स्कीमा वाला, और इसको यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा पहले, ताकि ये मैं यहाँ पे यूज कर सकूँ। सो इंपोर्ट प्रोडक्ट, in fact I'm not using the import syntax, I'm using ES5. So product and then require, and then like one directory back models, and then product schema. So that's pretty much like this. Make sure कि मैंने इस प्रोडक्ट को यहाँ पे मॉड्यूल एक्सपोर्ट के साथ किया है, तो मुझे करली ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। So let's do that, await and then product dot create, ये mongoose में डिफाइंड है पहले से, और उसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ जी this body which is like this, और इसको मैं कहता हूँ जी जब ये सक्सेसफुली चल जाए तो ये मुझे दे दे const product। ओके, लेट्स नाउ सी, या इसकी भी जरूरत नहीं है, सच वी जस्ट हैव टू पास अ मैसेज टू द क्लाइंट कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाए तो मुझे क्या दे यहाँ पे, मैसेज सक्सेस दिस, या यूं कह दें जी कि status that is going to be true, which will indicate that it is successful, and the message is success. You can do whatever you like, but this is the way I am doing it. और अगर एरर आए तो वो पूरा का पूरा एरर उठा के यूजर को भेज दे, सक्सेस फॉल्स कर दे, और ये पूरा एरर जो है मैसेज की जगह पे वापस भेज दे। सो दैट्स pretty much like, in fact, creating a product logic, हम we'll definitely improve it because हम ये error handling, global error handling middleware के जरिए करेंगे और बाकी सारे काम उसके। But for now, let's match the this one as well as the request that we are making. So title, description, price, stock, image, यहाँ से हम title, description, price, stock, image. So with this thing हम timestamps भी देखेंगे हमारी database में कैसे store होती है और बाकी चीजें। So let's make a request now. Let's open up the console to see if anything goes wrong. So ये कह रहा है जी import mongoose, so we cannot import, rather we can const mongoose equal require this. So now our server is running, database is connected. Let's make a request again. So our status is true and success message is success. It means that this body has been executed this, and it has saved the product, and then it has given this response to the user. So let's go to the MongoDB compass to check. पहले हमने ये कहा था कि हमने जो config के अंदर ये लाइन दी है ना, तो हमारा जो database का नाम होना चाहिए वो KFC होना चाहिए, so इसने database भी खुद ही create किया होगा। दूसरे नंबर पे database के अंदर collection होनी चाहिए इस नाम से, यानी यहाँ हमने इस नाम से हमने यहाँ प्रोडक्ट दिया तो वहाँ प्रोडक्ट्स की कलेक्शन बननी चाहिए, और तीसरे नंबर पे जो डाटा हमने भेजा है वो सारा डाटा जाना चाहिए। सो लेट्स डू दैट, क्लिक ऑन हियर, KFC नाम का डेटाबेस बन गया ये, और इसके अंदर प्रोडक्ट्स के नाम से कलेक्शन एज एक्सपेक्टेड, और उसके अंदर एक रिकॉर्ड जो हमने भेजा। सो दिस इज व्हाट ट्विस्टर, एंड देन सम डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्टॉक, इमेज खाली फिलहाल, देन क्रिएटेड एट, दीज आर द टाइम स्टैम्प्स एक्चुअली, एंड दे आर बिकॉज ऑफ दिस लास्ट टाइम स्टैम्प्स ट्रू फीचर। ये जब क्रिएट हुआ, अब जब भी ये प्रोडक्ट अपडेट होगा या ये फील्ड अपडेट होगी तो यहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट का टाइम आएगा, हमें मैनुअली डेट एंड टाइम को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स प्रीटी मच लाइक आवर फर्स्ट ऑपरेशन, क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट इनटू द डेटाबेस इन फैक्ट। और नाउ
what next do we need to do is कि अब हमें इसी पे बाकी सारे ऑपरेशंस कंप्लीट करने हैं। यानी हमने अभी किया है जी क्रिएट प्रोडक्ट, अब हम करेंगे गेट ऑल प्रोडक्ट्स। सो दैट्स वेरी सिंपल। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि वी हैव टू एक्चुअली again have to have the try catch block and then make it like async function। और इस try में we are saying that const products, ये हमने एक वेरिएबल सेव किया जिसमें सारे प्रोडक्ट्स लाएंगे। देन प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट विच इज द स्कीमा वन, ये वाला जो हमने इंपोर्ट किया है, डॉट फाइंड का बिल्ट इन फंक्शन मोंगूज में है, इसके अंदर ये एम्प्टी करली ब्रैकेट पास कर दें तो ये ऑल प्रोडक्ट्स जो है वो लाएगा और ये यहाँ पे सेव करेगा। और हम ये चाहते हैं कि अगर ये सक्सेसफुल है, यानी ये हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई है, तो देन यूजर को रिस्पांस दे दे और इस रिस्पांस में अगेन आप कह दें जी कि स्टेटस इज गोइंग टू बी लाइक ट्रू है, और मैसेज की जगह आप ये कह दें जी कि डेटा कह दें, डेटा, और वो डेटा जो है दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस डेटा। और एल्स में आप क्या करें, सिंपली यही वाला एरर, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो ज़ाहिर कैच ब्लॉक कैच करेगा, एरर में थ्रो करेगा और ये एरर हम यूजर को भेज रहे हैं। सो दैट्स प्रीटी मच इट, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। सो नाउ हम इस एंड पॉइंट को सेव कर लेते हैं ताकि हमें लेटर ऑन काम आए। सो दीज आर सेव, और इसके लिए हम बना देते हैं यहाँ एक नई कलेक्शन, एंड दैट इज KFC प्रोडक्ट्स। इसमें हम इसे सेव करेंगे सारे के सारे प्रोडक्ट्स के राउट्स को। सो इसे हम कहेंगे जी क्रिएट प्रोडक्ट, ताकि हमें बार बार ये काम ना करना पड़े। डिस्क्रिप्शन ज़रूरी नहीं है लेकिन हम इसमें ये ऑप्शन रख देते हैं। सो ये हमारे पास दिस इज द क्रिएट न्यू प्रोडक्ट राउट। सो जस्ट गो कॉपी दिस वन, क्लोज दिस और स्लैश प्रोडक्ट स्लैश ऑल गेट रिक्वेस्ट है। और हम ये चेक करते हैं कि हमने राउट में क्या लिखा है। हमारे राउट में आए तो हमने लिखा हुआ है स्लैश प्रोडक्ट स्लैश ऑल, गेट ऑल प्रोडक्ट्स पे जाएगा और गेट ऑल प्रोडक्ट ऑब्वियसली इसी फंक्शन पे आएगा और ये डेटाबेस में सारे प्रोडक्ट को फेच करेगा। सो लेट्स डू दैट। अभी तक हमारे डेटाबेस में एक ही प्रोडक्ट है, एक ही आना चाहिए, बट इट इज नॉट गिविंग मी दैट expected result. So what's wrong with it? Let's go and check it out. So here everything looks fine, but I'm not getting the, so let's see, slash API slash v1 slash product slash all. So let's see, slash product slash all, so okay, so ये यहाँ आप देख रहे हैं हमने सारों के साथ पोस्ट 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 लगाया हुआ है, हालांकि दैट्स नॉट द केस, दिस इज द गेट रिक्वेस्ट, सो दैट्स माय बैड। सो दिस इज द गेट रिक्वेस्ट, दिस इज आल्सो द गेट रिक्वेस्ट, और अपडेट के केस में दिस नीड्स टू बी द पुट रिक्वेस्ट, और यहाँ डिलीट के केस में दिस नीड्स टू बी द डिलीट रिक्वेस्ट। सो दैट वाज माय बैड लिटिल। So let's go ahead, still everything is working, and now if I come back and if I hit the same request in here, and this gives me the message false, status false, message false. And why it is giving me like this? But we are doing it like, okay, 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 okay. Let me do this, slash products and slash products. Let me check it out. If I break it, run it again, then this is good.
slash v1 slash products slash v1 slash products gets and get all products. And this is not basically hitting the right thing. Get all products. Get all products. It is coming right in here. And because it seems like it is giving me this. Let's console whether कि हम सही function को भी target कर रहे हैं या नहीं कर रहे. console.log hello. So like if we make a request again, we are getting hello. That's good. And then we are making try, and then we are making status false. Okay. One more thing that we need to do is I think we have to make it a wait. That's pretty much a bad part. So if I now go back, yep, I'm doing this. I'm receiving this request. So that part was missing. And now क्योंकि हमारे database में एक ही product है तो हमें एक product की जो detail है वो नजर आ रही है. अगर हमारे पास multiple products होते तो obviously we would have got all those products. Anyways, so let's try it once more by in fact पहले हम इसको सेव कर लेते हैं इस राउट को ताकि हमें ये भी पता लग जाए get all products and then do this और इसको KFC products में ही करेंगे हम get all. अब हम एक और प्रोडक्ट क्रिएट करके फिर जाके देखते हैं जी कि हमारा ट्विस्टर के बजाय lunch burger some description. This is going to be like 300 और इसकी जो हमारे पास quantity है this है. So if we now success and if we come back and get all, so we need to have these two. And इसी तरह हम अगर multiple products होंगे तो हमारे पास हमें multiple products भी मिल जाएंगे. So now what we have to do is the third one, which is let me remove this extra part. So let's do this. Get product by ID. And for that, once again, what I need to do is to have the try catch block, and I need to grab an ID that I will be passing from the front end, and then ID is going to be request dot params dot ID. And this ID is basically the same variable that has been specified right up here. ये ID यहाँ पे अगर कुछ और लिखा होता तो मैं उसके लिए यहाँ पे भी कुछ और लिखता. तो पैराम्स में मैं ये ID ले रहा हूँ. ये ID मेरे पास आ जाइए यहाँ पे और इसको मैं कहूँगा लेट्स मेक इट एन async और कहूँगा जी const product equals to await product dot find by ID, and that is going to be this ID. That's it. And now what I need to do is I just have to cut it from here and I have to like paste it here and I have to match the shape. That is going to be the status is true and then products की जगह product, the single product. And then in case of error, I have to actually copy this, paste it in here. अब मुझे ज़ाहिर है जब रिक्वेस्ट करूँगा तो मुझे एक आईडी भी भेजनी होगी because this is expecting an ID. So let's do that. Let's make a request again for the single product. So come back instead of here. So जहाँ मेरे पास all products आ रहे हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं जिस product की ये ID है उसको fetch करना चाह रहा हूँ और कहाँ से करूँगा. So once again localhost 9000 /API /product and /this ID. So this is what it's a get request. So if it is successful, I do have to have the product which is having this crunch burger. और अगर मैं ID change करूँ, like if I give the ID of another product,
in the params like this, I do have that twister which is successful. So let me save this first. Let me make it get product by ID. Let's save it inside here. So that's pretty much like this. मेरे पास get product by ID भी आ गया. And now what I have to do is so let me collapse this because these two are complete, and collapse this as well. Let's go ahead with this one. अब मुझे जब अपडेट करना है प्रोडक्ट तो मुझे उसकी दो चीजें चाहिए, बॉडी भी चाहिए और आईडी भी चाहिए. ऑब्वियसली जिस प्रोडक्ट को अपडेट करना है उसकी आईडी और जो चीज अपडेट करनी है उसकी बॉडी में से वो. सो लेट्स डू दैट once again. Let's copy paste something from here. मुझे ऑब्वियसली पैराम्स में आईडी भेजनी है, वो मुझे यहाँ से मिलेगी. और ये भी आप देख लें कि जो अपडेट प्रोडक्ट है इस राउट में हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अपडेट में प्रोडक्ट डैट अपडेट और आईडी आएगी यहाँ पे. और दूसरी चीज हमारे पास हमें क्या चाहिए, बॉडी const body equals to that is request dot body. और अब हम इसे कहेंगे जी try catch, और इसको हम कहेंगे sync, and then हम कहेंगे wait product dot एक और फंक्शन है mongoose का, find by id and update. और इस find by id and update में हम पहला पैरामीटर भेजेंगे id, ये हमें लिख रहा है कि id, और सेकंड आर्गुमेंट हम देंगे update. So id is going to be like this id, ये जो हमने यहाँ ली है, और body is going to be जो डेटा अपडेट करना है वो बॉडी में आएगा. So with this what we have to do is now यहाँ से हम ये कहेंगे this इसको हम कहेंगे डेटा के बजाय मैसेज, और that message is going to be product has been, या मैसेजेस हम सिर्फ success status true, or in case of error we have to do it like this. और ये जो एक्स्ट्रा चीज है we need to extrapolate it. So now update should be done. Like what if we have like we are having, if we make a get all product request, we are having these two twister, and हम twister को update करते हैं. ठीक है, so let's get it by id. हम एक और राउट बनाते हैं जिसको हम कहेंगे जी लोकल होस्ट कॉलन 9000, और मैं इसे कहूँगा जी स्लैश प्रोडक्ट स्लैश अपडेट स्लैश आईडी. और इसकी बॉडी में क्या भेजूंगा, क्योंकि मेरे पास ये लेट्स वेयर इट इज बॉडी, मैं अपडेट किसको कर रहा हूँ बेसिकली, जिसका नाम क्रंच नहीं, जिसका नाम ट्विस्टर है. बॉडी में क्या भेज रहा हूँ, बॉडी में ट्विस्टर ट्विस्टर 2 टाइम्स कर दिया मैंने. सम डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दिया मैंने. प्राइस मैंने कर दी जी 600, क्वांटिटी शेयर दीजिए मैंने 50. सो नाउ लेट्स सी कि जो हमारे पास एक दफा ट्विस्टर है वो वापस ट्विस्टर हो जाएगा. ये हमारा पुट फंक्शन है बिकॉज वी आर गोइंग टू अपडेट इट. सो इफ आई क्लिक ऑन दैट सक्सेस, और नाउ अगर मैं यहाँ गेट ऑल प्रोडक्ट्स करूँ तो ये पहले ट्विस्टर था तो अब अपडेटेड हो गया. क्या होना चाहिए, ट्विस्टर सम डिस्क्रिप्शन अपडेट 650, और ये ऑब्वियसली जिस टाइम पे अपडेट हुआ. सो our update route is also working. So update product, that's going to be like this.
or this. So with this thing all, what we now have to do is we have to pretty much like last thing of this product. अच्छा, इन सब के हम एरर हैंडलिंग और प्रॉपर सारा कुछ करेंगे दोबारा एक दफ़ा. एरर हैंडलिंग में हमें सिर्फ क्या करना है, ये चीज़ें चेंज करनी है जब हम कस्टमाइज एरर हैंडलिंग मिडलवेयर बना लेंगे तो, यानी हम एरर थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेसफुली हैंडल करना है, सेंट्रलाइज्ड वे में हैंडल करना है. So now for deleting this, let's collapse this. Let's do this. Delete के लिए भी हमें ID चाहिए होगी obviously. So let's have this ID first from the parameter, and then try catch, or inside try catch, let's save the product into the duct product, and that is going to be the await product dot find by ID, and that's going to be the ID. This, or let me have this. Okay, so now after this, what we have to do is this dot remove, and then we have to like this इसको भी हम कह देते हैं, that is going to be message product has been removed. और अगर एरर आता है तो इसको हम कर देते हैं delete because that was the sample one. इसको हम कर देते हैं copy, इसको हम करते हैं paste. So now if everything goes well, so we must be able to delete this as well. So collapse this, let's check this और make sure कि इसका route क्या है, /product/delete/id. So now currently we are having this. Okay, this is some error because our server got crashed for some reason. Why? Let's stress it. कह रही है await. Okay, हमने await लगाया लेकिन उस await के बाहर async नहीं लगाया. यहाँ हम await use कर रहे हैं and this function needs to be async. So now if we get all the products like this, अब हम twister को delete कर रहे हैं. So let me copy this ID of this and then localhost localhost 9000 /product /delete/id. So make sure कि इस request की जो type है that needs to be delete, और let's see, product has been removed. Now if we get all products तो हमारे पास सिर्फ एक product आ गया, जो बाकी था वो delete हो गया. So let me save it now and then delete product in here, and that's pretty much like this. So that's it. हमारे पास सारे जो operations हैं CRUD के वो complete हो गए हैं, और this is the good part is कि हम अब इसी को reuse करेंगे for the categories, for the orders, for the users. यानी हम just copy paste करेंगे, हमें basic चीज सारी complete कर ली. लेकिन copy paste obviously तब करेंगे जब हम इन सारों को perfectly जैसे हम चाहते हैं वैसे बना लेंगे. So हम इसी को refine करेंगे. रिफाइन से मुराद एरर हैंडलिंग और सारा कुछ पहले इसके साथ करेंगे, फिर हम आगे मूव करेंगे. अभी तो हमने इसका आइडियल केस कंसीडर किया कि इफ देयर इज नो एरर, तो बहुत सारे एरर्स भी तो आकर हो सकते हैं बीच में, तो उनको हमने कैसे हैंडल करना है, दैट्स द पार्ट टू बी कवर्ड इन द नेक्स्ट पार्ट. बट फॉर नाउ होप सो के दिस शुड वर्क वेल. सो I need a break for few minutes and then we'll start it again, because in the meanwhile इस वीडियो की लेंथ भी बहुत बड़ी हो जाएगी. I want to actually split this into two. So that's it. So I'm actually pausing it and we'll be coming back right after 5 minutes. ठीक है?